आए हुए हैं और मैं पहली बार किसी फिल्म या किसी शूट पर साइकाट्रिस्ट के यहाँ आई हूँ तो इट्स इंटरेस्टिंग। विद्या जी अगर देखा जाए तो आप प्रमोशन कहीं आप इमरान को या राजकुमार जी को मिस कर रही हैं कि अगर वो भी साथ में तो और अच्छा होता? कभी आपने हमने बहुत सारी इंटरव्यूज किए साथ में, फिर आई गेस ये टेलीविजन एप्लीकेशंस की स्क्रिप्ट जिस तरह से बनी है आई वाज रिक्वायर्ड हियर, वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, हम सब इसमें ही जुड़े हुए हैं। It's very nice to have Vidya ji on board. ये है मोहब्बत की शान बढ़ गई आज। विद्या जी सॉरी, इस इवेंट से थोड़ा हट के मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि करण जो रिसेंटली सेड दैट कि यहाँ पे जो मूवी मेकिंग है वो इतनी लिबरल नहीं है, हमें मतलब काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं राइट फ्रॉम सेंसरशिप टू पॉलिटिकल प्रेशर्स, और अगर ये सब ना हो तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और भी ऊपर हो सकती है और भी अच्छी बन सकती है। कितना मानती हैं आप इस बात को? I definitely think rather agree with Karan. हम लोग हमारे लिए डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि फ्रीडम ऑफ चॉइस कर्व हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सब बात कर रहे हैं, एंड बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रीडम ऑफ चॉइस इन अ डेमोक्रेसी वी शुड हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट वी वांट टू डू। एक सेकंड मुझे नहीं लगता कि एक हद से ज़्यादा एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही हूँ मैं एक हद तक जानकारी पा सकती हूँ कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या गया है, पर उससे ज़्यादा मैं वहाँ जाके फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना तो नहीं सकती, तो एक हद तक जिम्मेदारी होती है, उससे ज़्यादा नहीं। आपकी फिल्म में एक डायलॉग है सिंदूर मेरी नाम मेरी सिंदूर आपके नाम का, मतलब जो वो डायलॉग है काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो रियल लाइफ में कितना रिलेट करती हैं आप दोनों? कौन सा डायलॉग? जो इनकी मूवी में एक डायलॉग है विद्या जी का, सिंदूर मांग मेरी सिंदूर आपके नाम का। रिलेट कर पाने की बात नहीं है, ये रिलेट कर पाने की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि मांग औरत की होती है और सिंदूर पति के नाम का होता है, गला पत्नी का होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का होता है, कलाई पत्नी की होती है, चूड़ियाँ पति के नाम के। सो आई थिंक ये सच्चाई है, ये रिलेट करने या ना करने की बात नहीं है। विद्या जी ऐसा खबरें सुनने मिली है कि आप तमिल इंडस्ट्री में रजनीकांत के साथ आ रही हैं और रिप्लेस किया है, सच्चाई है इस बात की? तो मैं यही कहूँगी, दिव्यांका इस शो में एक साउथ इंडियन प्ले कर रही है, ये जानकर मैं बड़ी खुश हूँ। विद्या आजकल जो है वुमेन सेंट्रिक फिल्में काफी ये है मोहब्बत अभी नंबर 1 के पायदान पर आ चुका है, और इस शो में हमने बहुत मेहनत की है। जब हमने शुरुआत की थी तब सोचा भी नहीं था कि ये शो आज के दिन नंबर 1 शो बनेगा। 11 o'clock पे एक्चुअली हमारा स्कोर हमें पहले मिला था। आपने देखा है कभी हमारा शो? प्लीज़ देखिएगा, और अगर कोशिश एपिसोड से मैं शुरुआत करूँगी, आप कोशिश कीजिएगा हॉटस्टार पे आप पहले एपिसोड देखिएगा, स्पेशली काफ़ी सारे पहले कैरेक्टर प्ले किया है, रियली रिलेट टू इट। और ऊपर जिस तरीके से विद्या जिस भी सेट पे जा रही है वहाँ पे एक अधूरी कहानी को पूरा कर रही है, तो यहाँ पे आप मेरी भी एक अधूरी कहानी को ही पूरा करने आई है। हम एक बहुत बड़ी गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ननद की शादी परेशानी में है, मेरी ननद की शादी टूट सकती है। सो मैं जानना चाह रही हूँ कि जो मेरे होने वाले नंदोई हैं या जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड है, डिटेल आई डिडंट नो, इज एन एक्स बॉयफ्रेंड, एंड उनके बारे में कुछ सच्चाइयाँ जानना चाहती हूँ, एंड शी रियली हेल्प्स मी आउट, एंड विद्या जी के कहने पे मुझे बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है। विद्या जो है विद्या वुमेन सेंट्रिक फिल्में जो है आजकल काफ़ी अच्छा कर रही है। लीप में कितनी सच्चाई है ये तो एक तरह बताइए। विद्या जी वुमेन सेंट्रिक फिल्में आजकल काफ़ी अच्छा कर रही है, और आप भी यहाँ पर सेट पर अकेले ही प्रमोट करते दिख रही है, तो क्या लगता है उसका कोई प्रेशर है आप पर कि अच्छा करना है? ऐसा नहीं है, मुझ पर कभी कोई प्रेशर रहा ही नहीं, मुझ पर प्रेशर का असर ही नहीं हुआ। थैंक यू। और फिल्म में हम सब साथ में हैं, पर
और हम सब साथ होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम अलग अलग जगह पर ये फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। मैं टेलीविज़न पर आकर मैं कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Actually, Hamari Adhuri Kahani, it was a fantastic journey. And I think the man behind the music is Mohit Suri. We call him Music Suri, actually. Here is there. A round of applause for him, please. And we have Vidya here. Vidya, thanks for coming. Please come here. And I'm grateful for मुकेश जी and भट्ट साहब, उन्होंने मौका दिया ये गाना कंपोज करने के लिए. And now I can remember जब मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था गाना, मोहित सामने बैठा था और उनका आंखों में मैंने वो जो करने वाला है वो मैंने देखा था. और आफ्टर द पिक्चराइजेशन उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं मोहित के सामने गाना गा रहा हूँ, विद्या के सामने. जस्ट प्रे फॉर द म्यूजिक. Thank you. Love you all. And one more thing, we have Rashmi Virag, who has written the wonderful lyrics. Is there? Love you, bro. Love you. Mithun has kind of changed the way music is perceived now. Kyunki, I hope there are no directors here, movie directors other than Mohit. Thank God. So earlier, directors would go to musicians and say कि हमें एक dance number चाहिए, एक item song चाहिए, which even I have heard so many times from composers. But Mithun created a rage, a madness with one of the films that Mohit directed called Ashiki 2, called Tum Hi Ho. I swear I have never spoken about a song week after week, week after week, week after week, so much. And then of course Mithun has done Banjara, he has done Tere Bin from Bas Ek Pal, he's been there for really long. But now Mithun is, I should tell you this, the singer who sung the song was supposed to come from Assam. From, I think he is flying from Guwahati. His name is Papan. And he was flying Air India, and that's where the story ends. He's not here today. I mean, I have nothing against Air India, but when you're flying Air India and you have an event the next day, you're making a mistake. So I think we are setting up. Jeeta, thank you so much. Thank you so much. The song is already doing really well, but the man with the magic touch on the keyboards, Mithun, and the song, Humnava. Ladies and gentlemen, you're not clapping. The check is not going to get deposited tomorrow. Gave us Beete Lame, the man who gave us Mausam, the man who's given us Tumiyo, the guy who's given us Banjara, and the guy who's given us Humnava. Put your hands together for Mithun Sharma. Hi everybody, good evening. It will be really nice if, I think यहाँ पे majority लोग musician हैं. Most of the people over here are musicians. And one thing is very important that we all need to understand is that music को silence नहीं मिले तो फिर music और शोर में कोई फर्क नहीं होता. So we need that silence. Can I request everyone to please be quiet? And before I get to my keyboard, I would like to compliment, I think, one of the finest composers of our time and the pride of our nation today, who's given us one of the most amazing title tracks ever, Jeet Ganguly. And I'm really privileged to take it further from there. And
a lot of friends in the audience. So my song Hamnawa, I'd like to share a little bit about it. Mohit and me spend a lot of time talking about the song before किसी गाने पे आने से पहले, before getting the melody. और I think in the words of Mohit Suri, Hamnawa is a song of blossom. And I think let's hear it. Put your hands together for Mohit Suri and Vidya Balan. Please. He's told me something that is scaring me right now. But thank you so much for making it here. And thank you so much for attending your own music launch. What and where is Emraan Hashmi? Well, he missed the Air India flight also. What? He missed the Air India flight. Hey, you're copying my joke. Vidya, thank you so much for coming. I'm going to put forward the first question to you. आप एक इतनी intense actor हैं, आपने इतनी बेहतरीन films की हैं, and then आपका जो ट्रेलर में जो इमोशन निकल के आ रहा है, it's almost as if the music is elevating every emotion. So what did you love most about the music when Mohit told you that ये सारे गाने आपकी फिल्म में आने वाले हैं? Firstly, hi everyone. It's wonderful to see a full house. I think, you know, this music of Hamari Adhuri Kahani is tells the story of the film. I don't know how else to say it, and it all comes from the heart. When I heard Hamari Adhuri Kahani, the title track, I fell in love. I felt like this was a crutch I was going to hold on to help me perform the film. And every time I needed to get into the zone, it was Mohit's idea. He said, you just listen to this song. I guess every one of us has an Adhuri Kahani in our lives. So that's why you connect with the song, and that's why we're hoping you'll connect with the film. So that's just the first song. Mohit made you listen to Hamari Adhuri Kahani. Then he's like, okay, we've come out with a second song. Then he makes you listen to Hamnawa. What is the emotion then? It just keeps getting better. When I heard Hamnawa, I actually saw Emraan Hashmi perform it, and I understood why girls fall in love with Emraan Hashmi. He gets the best songs. No, I'm not taking away any credit from him, but it's a beautiful song. And yeah, it comes at a very beautiful place in the film. It's a turning point in the film. I think when you watch the film, of course, you'll know. But Hamnawa is an extremely... can you help me, Mohit? What is the word I'm looking for? The only way to describe it, it's as not put as everything is, even though it's a song about falling in love, it's not, it doesn't just talk about that kind of romance which happens when you fall in love at first sight, but it's felt more, and you know it's going to live a lifetime and it's going to live forever. And that, I think that's the genius of what all my music directors have done in this film. For me, I worked in another direction with this film. I first went and spoke about the film and spent time with them. And as I kept shooting, each song kept coming by. And I would say they have co-directed this film for me. So thank you, all my music directors. Thank you very much. Okay, wow. Adhuri Kahani. There's one question. These hands are the ones who chose certain films, certain directors. Yeah, put my hand down. Yeah, you can keep your hand down. Zehar, वो लम्हे, आशिकी, एक villain, आवारापन. Dude, how do you manage to choose such music? You know, Murder! I just told him this as soon as I came up that I get scared whenever I see him because he keeps asking the same question to me and putting me this. Because? And I keep telling him. Mohit, you're paying yourself a compliment. Yes, I hope you realize that. No, I get scared of answering this question because
I don't have an answer for it usually. He keeps like flying around the question but never answers it. I don't have an answer for it. So today I openly admit this. I don't have an answer to this question. Suren, you're never going to get an answer to this question. This is the last time I was asking you this. I can only credit my music directors, my lyricists and my singers, the stars of my life. I would be nowhere if it wasn't for all these people. I'm standing here today. So thank you all so much for getting me here today. Absolutely. I believe you. I believe you. But it happens to be the official audio music launch. And Sony Music would like to commemorate us, not me alone, but Radio Mirchi. So can I have our CEO and MD, Mr. Prashant Pandey, Vidya, if you could. Here I am again. This is photo moment and plaque moment. Of all frames. You'll sing Prashant, you'll sing That's called musical chairs. And can we also call upon the two music composers of this fabulous album, Jeet Ganguly and Mithun and Ami Mishra. Prashant, thank you so much. Mithun, thank you. Jeet, thank you. Mohit, Vidya, I would request your presence to give away the first set of awards. Now, these are the golden discs. So, I do the top 20, the Mirchi top 20. And when a song ends up staying in the top 5 for a minimum of 50 days, which is quite a lot with the kind of music that we keep getting now, it's fabulous. So, we give the golden disc. So, I'm going to call on the people who made the first song possible, क्योंकि दुनिया में एक टाइप के छोकरे होते हैं and इनको बड़ी डांट मिलती है, इनको पुलिस का डंडा मिलता है, इनको ठरकी छोकरे कहते हैं, लेकिन इनको अवार्ड कभी नहीं मिलता है. And today we are going to change that. So ladies and gentlemen, our first recipient of the golden disc, the team behind Turkey Chokro from PK, Swaroop Khan. Swaroop Khan साहब, आइए आइए आइए. Thank you so much.
थैंक यू रेडियो मिर्ची, आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये अवार्ड के लिए। स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा राजू हिरानी जी को जिन्होंने ये गाना दिया, अजय तुल जी को थैंक्स जिन्होंने राजू हिरानी जी की हाँ में हाँ मिलाया और इतना अच्छा गाना बनाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू रेडियो मिर्ची, थैंक यू। सोनन किरके जी के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू। Alright, that's the first golden disc that has gone out. भाई अब जो दूसरा golden disc है वो एक ऐसा गाना है जिसने नचाया नहीं, उतना नहीं नचाया, रुलाया बहुत, इमोट करवाया एंड 49 डेज के ऊपर रहा ऑन द नंबर 1 पोजीशन। एंड इस सॉन्ग को अगर अवार्ड ना मिले so I will become एक villain. And the first time I read the name of the song, I didn't think it was Galiya, I thought it was Galiya. मुझे पढ़ रही है तेरी गालियां। हाँ? Okay, ladies and gentlemen, Ankit Tiwari, Manoj Muntashir for producing a fabulous song called Teri Galiyan. ये घर की मुर्गी एक तरीके से, ये मतलब it's just apt that you give out the award. अच्छा, मैं गा तो सकता नहीं हूँ। मोहित सर, अ big thank you. Vidya, thank you for being here and honoring us with this disc. रेडियो मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। और हमसे खुश कौन है इस वक्त? अंकित। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा मिर्ची के सभी लिसनर्स के लिए, ये सब तभी मुमकिन होता है जब आप हमारा गाना सुनते हैं और बहुत दिल से सुनते हैं। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए। थैंक यू सो मच। अंकित, ओवर टू यू। सबसे पहला थैंक्स अगर बनता है तो मोहित का बनता है एक्चुअली। और मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट अगर कहें तो आशिकी 2 था। माय सॉन्ग वाज सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। उसके बाद सेकेंड टाइम विलन ऑफ कोर्स तेरी गलियाँ। मैं यही बोलूँगा मोहित कि यार आपने बहुत अच्छी नज़र कर ली थी, कर दे इधर भी तू निगाहें। जो लाइन थी वो बहुत फिट बैठती है हमारे आपके रिलेशन पे। मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे ट्वीट आ रहे हैं और मुझे हक के ट्वीट पे मुझे मेरा नाम लिखा होता है, उसमें पूछते मेरा गाना का है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। So thank you Mirchi, thank you for this, thank you Sren for calling me bro. Thank you guys, thank you so much. Thank you. And Ankit, thank you so much. Manoj, thank you so much. ये award जो है, it's completely deserving. The reason I'm saying it's Ghar Ki Murgi is because the next song, which is also the Golden Disc winner, happens to be again from the same film. Again, it's your film. Mohammad Irfan and Mithun for Banjara. And the beautiful thing is, it's for everyone who doesn't own a house in Bombay. Yeah.
Those who live on rent, this song will make so much sense. That's what I told Irfan also. Mithun, Irfan, if you could please come on stage, collect the award. I think Mithun sir should say something about the song first because it's his creation. Banjara is a very, very special song for us. Myself and Mohit spent a lot of time discussing about this song. And it was a very simple expression कि what मोहब्बत बहुत सी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, but in this song किसी बेघर को पनाह मिल गई. That was the metaphor that we used. And I really enjoyed writing this song a lot, and it came with a lot of ease. And actually I started writing also because of Mohit Suri. And then when the song came up, it wasn't not one of the easiest songs to sing. And it was a very tough call ki who's going to sing this song. And then I called in Mohammad Irfan, and I think one of the finest vocal performances of our recent times has been Mohammad Irfan. And trust me, Banjara is not easy to sing. But I'll be very, very happy to see Mohammad Irfan sing that song for all of us here right now. He's there. Don't let him go. I would just like to thank Radio Mirchi for this award. Thank you, ma'am. And I just can't thank enough Mithun sir for having faith in me and giving me such an amazing song. I'm very thankful to him, and I think I can just sing this song for you all. Thank you so much, Irfan. Thank you so much, Mithun. Yeah, before I leave the stage, this is the last chance. We need a round of applause for the fabulous band over here. They have prepared our songs, and I would like to say that Dharmesh was my senior. He used to come to college, and I have learnt a lot from him. Thank you, Mithun. Thank you so much. Thank you, Irfan. And to present the last award, Vidya and Mohit, all the connections coming. The next song is almost a song that threatens you. It's like Arnab Goswami would be singing this song purely because because it tells you, Tere hoke rahenge, dil zid par hai. It orders you. Raja Natwarlal, Irshad Kamil. So where are you? Yuvan Shankar Raja, who's not here. And the man who's always invisible, Arijit Singh. Irshad bhai, if you could come on stage to collect the golden disc for Tere Hoke Rahenge from Raja Natwarlal. Thank you very much. Thank you, Radio Mirchi, and thank you, KD, Kunal Deshmukh, and everybody who was involved in this movie. And more than that, thank you to the listeners who like this song. Thank you very much. Thank you. Thank you, Irshad bhai. Thank you, Mohit. Thank you, Vidya. Thank you so much for coming here. And I hope you all the best. We love the music. It's doing so well. I hope the music, the film all come together and it's a smash hit. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Just last words. I think I've never had
a song in the Mirchi top 20 for a very long time. I'm guessing Hamari Adhuri Kahani will break that. It's in the number 5 position already. Started at number Yes, 5. I'm hoping it goes up and stays there for a long, long time. But before I leave, 12th of June, I'll see all of you in the theatres. 12th of June. Thank you. Love you. Bye. Okay, to give away the next set of awards, another legend of the music industry, can we please put our hands together for Mr. Rajkummar Rathod. And also the director from Provoke, Mr. Nikhil Chaturvedi. Mr. Nikhil Chaturvedi. Okay, so Mr. Nikhil Chaturvedi and of course Rajkummar sir. The next golden disc that goes to the song, in the words of the singer, I'm not even telling you a story, in the words of the singer, he's so thankful that they used the actor's body and his voice and not the other way around. And it's a song that started a series of man crushes, purely because it features Hrithik Roshan topless on a beach. And what else do you want? Ladies and gentlemen, the team behind Meherban, Vishal Shekhar, who are not here, Shilpa Rao, a singer, and the man who gave us that massive quote. His body, Hrithik Roshan's voice, not happening. Ash King. All right. Thank you. Thank you. So you both will have to wait. Okay, now I'm not going to waste a single moment because there's a massive crowd that is gathering there. Ladies and gentlemen, the next Golden Disc Award winner, I only invited the musicians. This actor also turns up because he said it's my song. The team of G Karda featuring Varun Dhawan. Divyanka, Sachin Jigar, Priya Saraiya, where are all of you?
Divya, I either get you to sing or I get Varun to sing. No, I have to say Badlapur has been the most special movie of my life, and I have to thank Sachin Jigar because this journey would not be complete without them. I think it's very easy for the actors who just come in front of the screen and take all the credit, but honestly the real heroes are these guys who create these tunes for us to express all this anguish. Even Divyanka, who's come like an angel in my life, he's sung for me also in ABC2, has an amazing voice. So I'm going to request him to sing a little bit of Ji Karta for you guys. एक मिनट I would like to thank Varun कि कोई एक्टर ने किसी सिंगर को इतना प्रमोट नहीं किया जितना वरुण धवन ने किया है. And I would like कि वरुण धवन के लिए जोरदार तालियां हो जाए. म्यूजिक को इतना प्रमोट करने वाला एक इंसान देखा है मैंने, and that's वरुण धवन. Thank you सचिन जिगर कि मुझे इतने हिट पे हिट गाने दिए. Thank you प्रिया सरैया. नहीं गाना तो पड़ेगा ही. For all the जो बदला लेना चाहते हैं हथौड़े के साथ. How was the movie, sir? It's beautiful. What is special about the movie? मैं रो दूंगा अगर मैं बोलूँगा. It's very emotional. What is special about the movie, sir? It's emotion. It's one of the best love stories I've seen. It's a mature love story. What do you have to comment on the mature love story coming in Bollywood?
You've got it all. It's Vidya and Emraan. They're the best in the business. And how was the equation between Vidya and Beautiful, unreal, unreal. And direction of Mohit Suri, earlier they have given it a It's his best ever, I think. It's his best. I followed his work because I love Mohit, and Bhatt Sahab, it's their best work What ever. about the music part? Thank you. दिल को छूने वाला. Thank you. What do you say of the movie, Vidya? It's very, very intense and very moving. Direction of Mohit Suri, earlier he directed a villain and Ashki too. So this time, is it as successful as earlier? Success. This is his best movie ever. Hamari Adhuri Kahani is Mohit Suri's finest work. Agree? Yes. And talking about the mature love story coming in Bollywood, it's a mature love story. It's not a young love story as that. So what do you comment on it? Who decides that? I'm sorry, it's you who decide that. We don't want to watch teeny bopper romance. See you at your garden. So how the movie? Sir. Perfect romantic film. Perfect in every sense. What is the real USP of the film? USP is the love story, and कहानी वाइज जिस तरीके से भट्ट साहब ने लिखी है, मोहित सूरी जो जाने जाते हैं एज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, सक्सेसफुल डायरेक्टर, आई थिंक इस फिल्म के बाद उनकी जो ये लेवल थी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड आई थिंक हर इंसान चाहेगा दैट मोहित सूरी मेक्स दिस काइंड ऑफ फिल्म. विद्या बालन, पार एक्सलेंट, mark my words, another national award. Emraan Hashmi, पहली बार I've seen him completely different. Music तो obviously विशेष फिल्म में हमेशा बढ़िया रहता है. Brilliant, brilliant. Sri how was the movie as such? I mean, honestly, after a very long time, very emotional and amazing music. Hats off to Mohit bhai and Mahesh sir, and amazing. What is the equation between Emraan and Vidya? I think amazing equation, and the best part was all the lines, all the dialogues of the movie was brilliant, and the presentation. I mean, they are the best in the business, so there is nothing where you can actually say there was something missing. So superb, and that too, today was my first day outing with my wife after the baby was born also. So amazing movie, yeah. Thank you. Thank you.
How was the people reaction? कितने लोग आए देखने के लिए फिल्म को, कैसे रिएक्शन? आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले हैं हमें फिल्म के बाद। और एक्चुअली आज मैंने पूरी फिल्म देखी ठीक से, और अगर मैं खुद ये कह सकती हूँ तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैच्योर लव स्टोरी का टाइम है, मैंने काफ़ी सारी फिल्म है जो मैच्योर लव स्टोरी, तो मैच्योर लव स्टोरी के मैंने क्या कमेंट करना चाहिए? नहीं, काफ़ी सारी फिल्में नहीं हैं मैच्योर लव स्टोरीज शायद आंधी और सिलसिला के बाद एक इस तरह की फिल्म निकल रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और हाँ बस। और मोहित सूरी और विशेष फिल्म के साथ पहले बार एसोसिएशन आपका, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शुक्रगुजार हूँ भट्ट साहब की कि उन्होंने ये स्टोरी लिखी। 14 साल के वनवास के बाद उन्होंने पेन उठाया और बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है उन्होंने। और मोहित सूरी के साथ काम करने का मौका मिला, जो आज के दौर के एक तरह से महेश भट्ट हैं। तो इस हमारी अधूरी कहानी ने मेरी एक अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तो और क्या कह सकती हूँ। विशेष फिल्म्स के साथ ये मेरी पहली फिल्म है, इंशाल्लाह और भी होंगे आगे। थैंक यू, गुड नाइट। मैंने एक्चुअली इस शो के प्रोमोज देखे हैं और मैं हमेशा से ये शो देखना चाहती थी, बिकॉज प्रोमो बहुत इंट्रीगिंग लगा मुझे, और मुझे ऐसे रिलेशनशिप बेस्ड शोज़ और फिल्म्स बहुत अच्छे लगते हैं। पर अभी तक मैंने देखा नहीं, पर ये एपिसोड देखूंगी और फिर देखते हैं। किस तरह से विद्या इस एपिसोड में एंट्री होने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे सीक्वेंस के बारे में? हम एक्चुअली इत्तेफाकन मिलते हैं, रागिनी और मैं, और हमारे बीच एक कॉन्वर्जेशन होता है। इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन सीन। मतलब हम कई सारे शोज़ पे जाते हैं और एक सीन करके निकल जाते हैं, पर आज लग रहा है जैसे सीन किया है। बहुत मतलब मज़ा आया परफॉर्म करते वक्त। और रमी जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ। आई नो हिम फ्रॉम माई हम 5 डेज। और पल्लवी जो है चेंबूर की लड़की है तो ये जानकर भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपने अपनी करियर की शुरुआत भी टेलीविजन से की थी और आज फिर एक टीवी सेट प्रेजेंट किया, तो कितनी यादें ताज़ा हुई, मतलब कितना आप चेंज देखते हैं? हर बार आप लोग पूछते हैं कि कौन सी यादें ताज़ा हुई, पर ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क है। यू नो, मैं एक वीकली करती थी, ये लोग डेली कर रहे हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और यू नो आई रियली थिंक हैट्स ऑफ। उसके बाद भी ये जैसे मैंने मेट पल्लवी, शी लुक्ड एब्सोल्युटली फ्रेश। ये सीक्वेंस जो आपने किया है, ये आपकी फिल्म के प्रमोशन से कितना रिलेट करेगा और क्या? हाँ, वही मैंने जैसे कहा कि फिल्म हमारी अधूरी कहानी भी एक इंटेंस लव स्टोरी है और ये भी एक इंटेंस लव स्टोरी है। तो तालमेल बहुत अच्छा हुआ है फिल्म और ये शो के बीच। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंटीग्रेशन। जिस तरह से सीन लिखा गया है, एक टाइज इन हमारी अधूरी कहानी एंड इतना करो ना मुझे प्यार नहीं हुआ। पल्लवी के साथ कुछ आप प्यार वाली क्या मतलब क्या बातें आप दोनों के बीच? वो तो आप देख के पता करिए। फिर भी हमें कुछ तो रिलेशनशिप एडवाइस दे रही थी क्या? ज्ञान दे रही थी? ज्ञान नहीं दे रही थी पर आई थिंक मैं जब उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे थोड़ी सी यू नो इमोशनल लगती हैं, मायूस लगती है उस वक्त, और हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं और मैं उनको कुछ चीज़ें कहती हूँ। कई बार ऐसे ज़िंदगी में होता है कि किसी अजनबी से हम मिलते हैं, यू नो हम अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स उनके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मन हल्का ऑफ कोर्स हो जाता है, पर होता ये है कि आपकी सीक्रेट बनी रहती है क्योंकि आप उन्हें एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो आई थिंक यही फ़ायदा हुआ दोनों का इस सीन में। मैं उनको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ एंड आई थिंक दैट विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। क्या आपके एक्सपीरियंसेस से उनकी अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी? हाँ, मेरी वसुधा की एक्सपीरियंसेस से आई थिंक उनकी कहानी
पूरी होगी या नहीं पता, पर या आई होप अधूरी ना रह जाए। विद्या जी प्रमोशंस को लेके आपका क्या कहना है? मतलब आपने इससे पहले भी काफी प्रमोशन किए इस मूवी को लेकर, कहीं पे आप टायरिंग महसूस करती हैं? आपको ऐसा लगता है कि प्रमोशन आजकल बहुत जरूरी हो गया? व्हाट डू यू थिंक नहीं, अबाउट पर एक्चुअली इस फिल्म के लिए हम बहुत कम कर रहे हैं, जितना मैंने दूसरी फिल्मों पे किया है उतना नहीं कर रहे, बिकॉज हमें लग रहा है कि इस फिल्म को उस तरह से हार्ड सेल नहीं किया जा सकता। हम लोगों से ये जाके नहीं बोल सकते कि देखिए देखिए हमारी फिल्म आ रही है, देखिए यू नो एक सुर अलग है इस फिल्म की। पर इसीलिए यू नो टेलीविज़न फिक्शन शोज़ में, बहुत पॉपुलर सीरियल्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जहाँ सही फिट बैठता है। रियलिटी शोज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे, पर काफ़ी सारे ऐसे शोज़ हैं जिसके साथ अच्छा इंटीग्रेशन हो सकता है given the subject, or we want television audiences, we are welcoming television audiences, you know, to the theatres with this, through this integration. I ask? Yes, Sumit. Good evening, Dr. Vidya. Good evening, Sumit. Vidya, आप अपनी साड़ियों के लिए जानी जाती है। उस दिन भी बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी, वाइन रंग की थी साड़ी। जी बिल्कुल, काली घनी। मैं वाइन पीती नहीं हूँ पर वाइन रंग की साड़ी पहनती हूँ। बहुत पसंद की लोगों ने। हाँ जी 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 जी। थैंक यू। मुझे डिज़ाइनर से कहना चाहिए, उनका नाम रिक है, वो बहुत खुश हो जाएंगे ये जानकर कि जो पल्लवी है शो में वो भी काफ़ी बेहतरीन साड़ियाँ पहनती। उस बारे में कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, उनकी आज जो उन्होंने साड़ी पहनी है वो मुझे अच्छी लगी। मैं उनको बस देख रही थी। मैं कहीं भी अच्छी साड़ी देख लेती हूँ तो मैं ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, पूछ लेती हूँ कहाँ से लिया आपने वगैरह। पल्लवी से अब तक पूछने का मौका नहीं मिला है, पर मैं पूछूंगी। आज भी रिक ने ही बनाया? आज मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनी है मैंने। पीच कलर है ये? हाँ, हल्का बेबी पिंक है शायद। लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं साड़ी पर। बटरफ्लाइज? या हाँ। Yeah, you know, I haven't done a love story after Parinita, so but this is a beautifully intense love story, and I'm glad that, you know, I'm part of this film because it's special for me in many ways. One, I've always wanted to work with Mahesh Bhatt Saab, but he gave up direction before I became an actor. So on this film I've got, you know, I've had the chance to work with him because he's written the film, and sorry, and again, I shouldn't be saying this in front of Mohit, but genuinely I do think that Mohit has, through all his films, that ability to touch you, to stir you, to move you, and that's what this film, this love story requires. So, and of course I'm pairing up with the Emraan Hashmi again. So, and Vishesh films, you know, I never thought really that in my career I would do a Vishesh films film, because the kind of films they make are very different from, for some reason. So I was so thrilled when I got that call to be part of this film, because I said, okay, one more tick mark, and a very special one at that. So Vidya, what's that one special thing which touched you in this whole story? It's a love story or an adhuri love story? It says it's Hamari Adhuri Kahani, और कहीं ना कहीं हर कहानी अधूरी होती है. मोहित ने अंदर रेडियो स्टेशन पर कहा कि एक कपल में अगर एक गुजर जाए तो उनकी भी कहानी अधूरी ही रह जाती है, तो हर कहानी अधूरी होती है, and ours is also an अधूरी कहानी. What touched you most about it is the fact that it is अधूरी, and a lot of times what you think of as true love ends up being an अधूरी कहानी.
आदम की कोई कहानी नहीं है जो अधूरी रही हो अभी तक, कोई ऐसी कहानी? बहुत बहुत कहानियाँ पर आप पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हैं? मैं ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। मेरी पहली, मुझे एक्चुअली लगा था कि मेरा ये फिल्म एक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, ये कहानी अधूरी रह जाएगी, बिकॉज़ मेरी पहली फिल्म, मलयालम फिल्म बीच में रुक गई थी और बहुत सालों तक उसके बाद मुझे कोई फिल्म नहीं मिली, या तब लगा कि ये मेरी अधूरी कहानी होगी, पर थैंकफुली आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी टेक्निकली मुझे लगता है सिर्फ फिल्मों में कहानी खत्म होती है, आई थिंक रियल लाइफ में कभी कहानी खत्म ही नहीं होती है। आई थिंक एज शी सेड, यू स्टिल कीप लविंग, इट्स नॉट लाइक माई स्टोरी विद माई वाइफ और वन पर्सन आई लव इज ओवर, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, वी कीप इवॉल्विंग, और I think that's the one distinct thing that what people are connecting with this film. I think it's somewhere considered as a real film, कहीं ना कहीं इमोशनल आइडेंटिफाइबल है। ओके विद्या, जिस तरह की फिल्में मोहित करते आए हैं, चाहे आशिकी 2 की बात करें या विलन की बात करें, कहीं ना कहीं लव स्टोरी रहती है फिल्म के अंदर। अगर मैं अधूरी कहानी की बात करूँ, किस तरह से उन फिल्मों से जुदा होगी? मैच्योर स्टोरी लग रही है, मैच्योर लव स्टोरी लग रही है, मैं कहना चाहूँगा, किस तरह से अलग होगी जिस तरह का सिनेमा मोहित करते हैं, खास करके लव स्टोरीज को लेकर? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि मोहित ने एक जॉनर अपना बनाया है लव स्टोरीज़ का। लव स्टोरीज़ में हिज फिल्म्स आर वेरी, उसमें कोई आर्टिफिस नहीं होता, कोई सुपरफिशियलिटी नहीं होती, और हमारी अधूरी कहानी किस तरह से अलग है वो एक्चुअली वो बता पाएंगे। आई थिंक लव का लैंग्वेज इतना अलग होता नहीं है। आई थिंक अगर आप कह रहे हैं कि एक पॉपकॉर्न रोमांस नहीं है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर वो आशिकी में भी नहीं था और वो विलन में भी नहीं था। आई अंडरस्टैंड दैट, बट व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट इट के कहीं ना कहीं ये एक कहानी ऐसी हो सकती है जो आपकी आसपास किसी ने आपको सुनाई होगी। कहीं ना कहीं आशिकी एक स्टार की कहानी थी, पर ये कहानी आपकी खुद की हो सकती है, आपके मदर की हो सकती है, आपके फादर की, इट कैन बी समवन दैट यू नो, योर सिस्टर, ब्रदर। इसमें जो, क्योंकि इसकी जो सोर्स है जो भट्ट साहब ने कहीं ना कहीं लिखी है, वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की ज़िंदगी से, अपने पेरेंट्स की लाइफ से, इमरान की पेरेंट्स की लाइफ से, कहीं ना कहीं उन्होंने उधर से ही ड्रॉ करके ही इज़ मेड रेफरेंसेज ऑफ अ फिल्म लाइक दिस। और मैंने अक्सर ये देखा है कि जितना पर्सनलाइज करो कहानी को, वो उतनी यूनिवर्सल होती है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मैंने देखा है कि अक्सर जब कहानी ऑटोबायोग्राफिकल या खुद होती है, ज़्यादा लोगों को छूती है। आई डोंट नो हाउ। But recently we've seen a trend of smaller films like Queen, Kahani, more recently Ashiki. Ashiki too. Doing really, really well at the box office. This question is for all three of you. Do you think it all boils down to content is king? Oh, of course. Yeah, I think none of us would be sitting here if content wasn't king. I think it stands the test of time, and I think that's a very heartening trend now in the industry. We've seen that the film drives itself. And when you have a film that has powerful content that goes and connects to a lot of people, and that's what we were just saying in the last interview, you can't bulldoze the audience into a hall just by some marketing push. There has to be some soul in the marketing push, and that soul comes from the content in the film. So we have seen that films that might even start off slow go for long runs in the and they endure for weeks together. So it's a great trend that films are working for films, and when the audience comes in, and there's no better publicity than word of mouth, and we all know that when the audience comes out of a 12 o'clock show on the first day, they either make or break a film. So when they go out there and tell their friends and family that go watch this film, it's a very unique film, that reaches my ears also. It somehow just spreads very fast, and that's the best way to judge a successful surprisingly film. It doesn't work with celebrities tweeting about and saying that the film is very good. It's really amazing. Yeah, people have started looking through those things. It's amazing that people say that about certain films, or they still don't go watch it. But if a friend of yours, probably a person you don't even like, who says, "Oh, that film is really good," you might still go watch it. I don't know why. Imran, music plays a very important role in all your films as of now. So what about this film? What role does music play in this? I think music has been playing a vital role, not just in my career, and a lot of actors in films, to drive a central emotion, because Hindi films are all about that unique melody that kind of runs through the film, that becomes almost like a spine.
for the film and what it has to offer. So yes, I've been very grateful that in my films I've had enormous success through also the soundtracks of my films and very memorable ones. Hamari Adhuri Kahani, without mincing my words, I can say is that if I have to look back at my career and see all those albums, and a lot of them, thankfully to all the music directors and directors who have made that possible, this would be up there with the best. Maybe a track like Hamari Adhuri Kahani or Eh Hum Nawa. It's something that will really move you, and you'll know this when you see the film, so I don't harp too much about it, but when you go into a cinema hall and see this film, if you're not moved to tears with the romance, and which is heightened by the music of, maybe when Hamari Adhuri Kahani, the title track plays, you will be moved to tears in the film, and that's the power of also the music that kind of lifts the emotion in the film. Well, thankfully मेरी कहानी पूरी हो गई क्योंकि मेरी शादी हो गई और अभी 9 साल से हम हैप्पीली मैरिड, लेकिन आई थिंक हम सब की ज़िंदगियों में कभी न कभी वो इंस्टेंसेस होते हैं, वो शायद वो रिलेशनशिप नहीं होगा, वो एक फ्रेंडशिप होगा जो जिसका एक ट्रैजिक एंड हो जाता है, वो कहीं वो आपको एक सोलमेट मिलता है एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल अराउंड. तो आई थिंक हम सब की ज़िंदगी में वो एक पल, वो एक इंसान आके चला जाता है, एंड वी wished we could hold on to that person. So yes, like all of us, I think even I've had that in my life. One last question, Vidya, Imraan touches on domestic violence. How much did that affect you as an actor? Or did that take a toll on you, probably enacting those scenes? No, it didn't. But I think when I read the script, it was obviously a bit out of my realm of reality, because you feel that at least people around me are not going through things like that. That becomes your reality, but at the same time you're aware that domestic violence is something that women are dealing with from all walks of life, and most often it's not spoken about, so you think the people around you are safe, or so I think I was disturbed when I read it, and I didn't know how it would play out. But I think given in the film and the way it happens, it felt very. She is a traditional woman who believes that she is her husband's property. So she has never questioned how he controls her life, how he treats her, and therefore, for her, for the character, it didn't seem, though it hurts, it pains, it's for anyone going through that, I think it would be difficult, but it's just her reality. There's something that she has to deal with until someone else shows her respect and value and love. She doesn't realize that she could be treated differently. Imraan, Vidya said earlier that she's working with the Imraan Khan, and you have worked with so many Emraan Hashmi. Hello. Okay, I'm so Wake up. So, you have worked with so many actors in the past. So how is it different to work with Vidya, because you all have done 3, now this is your 3rd film together? Well, it's been great. Ever since we worked in the first film, we didn't interact too much in the first film because we didn't have too many scenes together. But we got to know each other through the promotional campaign of Dirty Picture, and we've had that one scene which everyone talks about in Dirty Picture that didn't complete actually the love story, and also that's a Adhuri Kahani. And with all the hatred through and through the film of Silk and Abraham abusing each other and almost getting to each other's throats, there's that one scene where Abraham comes to Silk's house, and people say, God, if there's any one romantic scene that sums it up for us, it's that scene in Dirty Picture. So people have been telling me that, why don't you do an out-and-out romantic film with Vidya, because that scene was so explosive. We want to see that in a 2-hour film. And then it was made possible recently with Hamari Adhuri Kahani. So for everyone who's been in love, I'm sure you can enjoy that and fall in love again, because the chemistry is something you don't have to work on. I think that comes across, and hopefully you'll see that in this also. So it's been great working with her on Hamari Adhuri Kahani. Thank you guys. Thank you.
एक सेकंड Last question. I just want to ask one thing. इंडिया में मेहमान को भगवान माना जाता है, पर आज भी अगर बाहर से कोई लोग आते हैं, so they sometimes feel offended, जो कुछ यहाँ पे होता है. Do you feel situation अभी भी नहीं बदली है? कभी हम बाहर जाते हैं तो हम भी offended feel करते हैं. I'm not saying we consciously treat people badly or anything. So sometimes, these things happen, but I think it works both ways. I think मेहमान का भी responsibility होता है how they when they go to somebody else's house. A lot of recent cases comes where कोई आता है, cases happen या फिर जब यहाँ पे आते हैं they don't treat them well. So जो अतिथि देवो भव line. I think there is no other country that's as welcoming or warm as India. We Indians make everyone feel at home. So I think that's very unfair of you to say. Thank you.
विद्या। Good evening, Sumeet. लाइक आपके जो सहयोगी लोग हैं, जो आपके सह कलाकार, उन्होंने भी शुरू कर दिया आपको कहना? सब मुझे टीज कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर कह के और मैं उनसे बस यही कह रही हूँ कि हर मर्ज की दवा नहीं है मेरे पास। आज इस सेट पर आए, कुछ खास जुड़ाव इस शो से? हाँ, पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं। गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, वो भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, वो बहुत करीब हैं और तो इट वाज एन ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन। यहाँ तो आना ही था और शो बड़ा अच्छा है तो इट वाज a question to both of you, Vidya and Mohit. How does it help a film while by coming to and conquering television audiences on sets and all, because recently you visited India's Got Talent and now this show. So how does it help? No, we haven't visited any reality show. नहीं, we've not done any reality. हम लोग इस बार कोई reality TV shows नहीं कर रहे हैं। But I think जो integration इस फिल्म में हम लोग try कर रहे हैं, we are only choosing to be with those shows जिसका theme कहीं ना कहीं हमारे फिल्म के आसपास है, उसके इर्द गिर्द उसके थीम से। और क्योंकि गुरु सर ने खुद मेरी फिल्म देखी है and he felt how it can be integrated. It's a win-win for both, I think. So I think what it really helps, I think television is the mass medium more than anything else, and I think the best way to reach out to people आपकी कहानी बताने के लिए, rather than going on to dance shows and music shows. I mean that's another kind of audience, but this was the best way to reach our people. विद्या जी, अगर आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो ट्रेलर में हमने देखा काफ़ी इमोशनली स्ट्रेनिंग लग रहा है आपका कैरेक्टर देख के। आपके लिए कैसा रहा ये कैरेक्टर को अपने आप को प्रिपेयर करना, और कौन सा एक टफ डे था जो आपको लगा कि बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया? हाँ, इंटेंस डेज थे पर मैं नहीं कहूँगी कि टफ कोई डेज थे, एंड दैट्स थैंक्स टू मोहित। इसीलिए नहीं क्योंकि ये मेरे साथ बैठे हैं पर इन्होंने बहुत प्यार से काम करवाया हम सभी से, तो थकान महसूस नहीं हुई। हालांकि इस फिल्म में होनी चाहिए थी क्योंकि इतनी इंटेंसिटी वाली फिल्म है, पर वो एज अ डायरेक्टर आई थिंक ही नोज़ हाउ टू हैंडल हिज एक्टर्स। कभी बहुत इंटेंस सीन कर लेते तो अगले दिन थोड़ा सा कम इंटेंस कुछ करवा लेते, और कभी हमें प्रेशर महसूस नहीं होने दिया क्योंकि डायरेक्टर पे बहुत प्रेशर होता है। और एक स्पेशली आप आउटडोर लोकेशन पे जाते हैं तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, लोकेशन आपके पास चंद ही घंटों के लिए होता है कभी, और ये सब भी प्रेशर्स, पर ही नेवर लेट एनी ऑफ अस फील दोज प्रेशर्स। सिर्फ हमसे कहते थे कि आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। मोहित सर अगर बात करें इस कहानी की, ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी बेस्ड ऑन महेश भट्ट पेरेंट्स, कितनी सच है ये बात? well, एक्चुअली इस कहानी का सोर्स जो था वो एक इमोशन पे था जो इनकी स्टेप मदर और मेरी स्टेप ग्रैंड मदर एक्चुअली और मेरे ग्रैंडफादर पे हुई थी। बट आई थिंक दैट्स व्हाट भट्ट साहब इज़ बेस्ट एट। आई मीन इट्स नॉट ऑटोबायोग्राफिकल, पर एग्जैक्टली फ्रेम्ड में ऐसा कुछ नहीं है, बट उसका जो सोर्स है वो एक रियल है। और सिर्फ उधर से नहीं, आई थिंक इवन इमरान के ग्रैंड मदर से कुछ लिया गया है। बट दैट्स व्हाट ही इज़ बेस्ट एट। आई थिंक भट्ट साहब ने जितना भी उनका खुद का जो सिनेमा किया था, he had always drawn from real life and made that kind of characters. That's why it's so alive. करो तुम लोग। You know, I think I feel like I'm 10 years old because it feels like Parinita happened yesterday, but yes, 10 years and so many films down, it's still a bit unbelievable for me. I've had the opportunity to be a part of some wonderful films, work with people I aspire to work with and more. Told wonderful stories and have received so much love more than anything else.
I just have to keep pinching myself, and all I can keep saying is thank you universe, thank you God, thank you everyone. It's been very fulfilling. It's better than anything I could have hoped for, prayed for, imagined. How changed do you see yourself as a person, you know, in 10 years? How were you when you entered, and now how different do you feel you are? I think, of course, I've learned a lot, and I think I've grown as a person. Success also gives you the confidence and the opportunity to make your own choices even more than you did before. What has changed? You know, one thing has remained unchanged, and that is my passion for what I do, to act. Every time I hear a good script or I'm offered a good role, I just want to get on set. I just want to prepare for it. I love everything that I do. There's that hunger in me is still very much there. You know, every star has phases, highs and lows. So, what would be that one advice for people? You know, how to deal with the lows that you come across as actors? I think it's very difficult because you do question yourself when you're going through a low. There is self-doubt, which is fine, but don't doubt yourself. I don't know if... I think I've had family and faith are the two things that I hold on to very dearly at all times, in good and bad times. And I think I'm fortunate in that sense, because I know a lot of girls and boys leave home and come away far from their families, and they don't have that emotional sustenance, which is why also it becomes all the more difficult to deal with. So therefore, some sort of faith, I'm not saying religious or anything, but something that helps you believe that nothing is impossible, that there are no rules, that you can do things your way. There is no one way to achieve your goals or realize your dreams. But there is one thing that will always take you ahead in life, and that's loving yourself. And if you had to name that one person, only one person, who's, you know, been your strength all through your highs and lows, who would that be? I think my family. I can't name one person out of my family. Okay. Yeah? We wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Bye. Good night.